आइकॉनिक रेसिपी में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम पनीर आलू पकोड़ा विद तंदूरी मेयोनीज। इसे बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आइए चलो देखते हैं। बेसन, ब्रेड, धनिया, तंदूरी मेयोनीज, अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट, चाट मसाला, नमक, पनीर, कॉर्नफ्लोर, चीज़ और उबले हुए आलू। सबसे पहले हम आलू को स्मैश करेंगे। अब आलू के ऊपर पनीर को क्रश करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक, चाट मसाला, हरी धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ब्रेड को हम गोल आकार में कट कर लेंगे और बचे हुए टुकड़ों से हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। अब ब्रेड स्लाइस को मेव लगाकर ऊपर से आलू का मसाला और चीज़ डालकर पैटी तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए बाउल में कॉर्नफ्लोर, बेसन, नमक और पानी डालकर पतला सा घोल तैयार करेंगे। पैटी को बैटर और ब्रेड क्रम्स में डिप करके कढ़ाई में फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि पकोड़ा हमारा कितना क्रंची हो गया है। इसी तरह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।